तो आज आम टॉपिक जो डिस्कशन करवा जो टॉपिक रो आम डिस्कशन अच्छी सीएल एथिक्स एथिक्स रे टॉप 505 क्वेश्चंस आज आम करवा देखिए आ बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो ये क्लासेस देखिले तो ओपीएससी मेंस पाई रैपिड रिवीजन जो क्लासेस रहिबो 25 डेज 125 मोस्ट इंपोर्टेंट तुमर क्वेश्चंस देखिबा तो सही थे एथिक्स रे आज आम 5टा क्वेश्चन देखिबा 5 क्वेश्चंस ये रहिबो एथिक्स रो तो फर्स्ट क्वेश्चन आम देखिबा कंट्रास्ट द एथिकल चैलेंजेस फेस्ड द प्राइवेट रिलेशनशिप वर्सेस पब्लिक रिलेशनशिप कौन ना कंट्रास्ट the ethical challenges faced in private relationship and versus public relationship and provide examples to support your argument right. What is private relationship versus public relationship आमे ताको इंट्रोड्यूस करिया दरकार काना मेन ये क्वेश्चंस रे दीटा मेन तुमरो सब्जेक्ट उडला प्राइवेट रिलेशनशिप आ उडला पब्लिक रिलेशनशिप ओके तो तांको भितरे आमे डिफरेंस भी देखिया दरकार एवं सही अनुसार तांको भितर रिलेशनशिप कौन चैलेंजेस फेस करछि एंड सही अनुसार आर्गुमेंट देके दबा ओके so humans beings are social animal so we interact with each other and establish some relations when we interact with each other है ना नहीं तो हमें जेहेतु ये सोशल एनिमल आम सोसाइटी सहित इंटराक्ट करूँ समस्त सहित इंटराक्ट करूँ और इंटराक्ट करला परे आम गोटे बेसिकली एस्टाब्लिश करूँ गोटे रिलेशन गोटे रिलेशनशिप एस्टाब्लिश करूँ तो interact with each other and establish more some relations when we interact with each other. Gandhiji said, for achieving a non-violent and truthful society, it is important to have a good relationship. Okay, so these are the quotes you need to do in ethics. Ethics रे ये भलिया quotes देले ही तुमको फायदा आसीबो. तो कौन है ना आम भर जो रिलेशनशिप चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो ता भर गुड रिलेशनशिप हवा बहुत जरूरी तो फर्स्ट देखा एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ एंड एथिक्स इन पब्लिक लाइफ प्राइवेट लाइफ रे देखा एंड पब्लिक लाइफ सब इम्पोर्टेंट है पर्सनल मोरालिटी कौन ना इंडिविजुअल इन प्राइवेट रिलेशनशिप may rely more on individuals internal set of principles values and beliefs प्राइवेट लाइफ माने तुम्हें इंडिविजुअल अच्छो तुम भितर कहार सहित किसी संपर्क नहीं एवं तुम्हें तो पर्सनल मोरालिटी कौन ना इंडिविजुअल इन ए प्राइवेट रिलेशंस may rely more on individuals internal set of principles values and beliefs right or wrong. Then social norm. These are widely accepted rules or expectation within the society that guide and regulate individuals' private behavior. माने मोर और लेस ये सेल्फ सेंट्रिक राइट इंडिविजुअल प्राइवेट एथिक्स जोटा कि एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ कहबो ये मोर और लेस सेल्फ सेंट्रिक आउ सी इंडिविजुअल रो तार निजे ही सी गाइड करे that guide and regulate individual private behavior भी so initially जेतले मनुष्य जन्म हुए से सोसाइटी रु सब किछि सिख तो ताकू सोसाइटी गाइड करे तो दीज आर कौन ना वाइडली एक्सेप्टेड रूल्स और एक्सपेक्टेशन जोटा कि सोसाइटी भितर थाए एवं सी गाइड करे एंड रेगुलेट करे इंडिविजुअल बिहेवियर देन प्राइवेसी इट इन्वॉल्व्स सेफगार्डिंग कॉन्फिडेंशियल मैटर विदिन द ट्रस्टेड रिलेशनशिप एंड एम्फसिस the importance of respecting individual boundaries
क्लियर तो गोटे प्राइवेसी प्राइवेसी माने वेरी फ्यू पीपल जी कि जहाँ ट्रस्ट कर सहित तुम्हें शेयर कर इंडिविजुअल बाउंड्री देन ऑटोनॉमी it involves recognizing and respecting the autonomy and choices of individual it involves recognizing and respecting the autonomy and choices of individual okay कौन ना recognize करवा respect करवा एवं autonomy and choice individual choices and individual autonomy ऊपर depend करे then loyalty it foster mutual trust in relationship it foster mutual trust in relationship creating a foundation of reliability and mutual understanding creating a foundation of reliability and mutual understanding. And finally, the support. It entails motivating and offering assistance to those close to them. तो ये इंडिविजुअल प्राइवेट लाइफ रे सी तार ये सब काम करे सपोर्ट करे हो या लॉयल्टी हो या ऑटोनॉमी हो प्राइवेसी हो सोशल नॉर्म्स हो एंड पर्सनल मोरालिटी हो ये सब को मेंटेन करे देन पब्लिक लाइफ रे कौन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट तो तुम प्राइवेट लाइफ रु कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आसे जी सर्विस रे रुए जी सिविल सर्वेंट रे रुहती से यही सब जिनस कनफ्लिक्ट आसे इट रेफर टू द एबिलिटी टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स इंफॉर्मेशन विदाउट बीइंग अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग बायसेस एंड ओपिनियंस तो फर्स्ट है कौन ना एबिलिटी टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स ऑन इंफॉर्मेशन without being unduly influenced by this is very important personal feeling biases and opinions आउ कार ओपिनियन रे तुम्हें चेंज हेनी सो public life should consider the broader impact on the society and prioritize well-being of the community आगे पब्लिक लाइफ या मेजॉरिटी पीपल को ब्रॉडर इम्पैक्ट हुए सोसाइटी रे तो ताकू प्रायोरिटी दवा community then openness public life should prioritize transparency by openly sharing their decision and actions providing reason for their choices and limiting the withholding of information लुचेवा ट्रांसपेरेन्सी मेंटेन कले तुम्हें जो इनफॉरमेशन को विथहोल्ड कर सेटा को हटेब एवं तुम चॉइसेस कहीं डिसीजन निगला कौन पर निगला तार लॉजिक सह पुट कर एंड अकाउंटेबिलिटी public relationship involve greater degree of accountability the community or the stakeholder then selflessness holders of public office should make decisions the holders of public office should make decisions only in terms of public interest only in terms of public interest then leadership it serves as a ethical role model for the decision making process public organization तो पब्लिक इंटरेस्ट तुम निजर सेल्फनेसनेस रजर इंटरेस्ट किसी लीडरशिप क्वालिटी जोटा कि तुम्हें रूल मॉडल भाया डिसीजन नब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन देन अकाउंटेबिलिटी फिक्स हम तुम्हें जोटा कि ग्रेटर डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स हम टू द कम्युनिटी और द स्टेक होल्डर मान तुम इनफॉरमेशन दब कि तुम्हें ये पैसा ये खर्च कर ओपननेस रहा दरकार पब्लिक इंटरेस्ट तो आम देखिलु एंड देन ऑब्जेक्टिविटी so these are basic difference between private life and public life and ethics in private life ethics in public life समझते क्लियर है लो देन चैलेंजेस कौन एथिक्स देखिले एथिक्स इन पब्लिक लाइफ एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ चैलेंजेस कौन okay what are the challenges the private relationship involve personal interaction the private relationship involves personal interaction where emotions loyalty trust plays a crucial role
ओके। So private relationship involve personal interaction where emotion ho, loyalty ho, trust. There is a very crucial rule. Ethical dilemma in this relationship often arise due to personal biases, emotional conflict and expectation. Conflict केतले आसे, challenges केतले आसे, dilemma केतले आसे, जेते बड़े relationship भितर ये arise जेते biases ना आसे, personal biases. जेते emotional conflict आसे या expectation किसी कार उठाए जो expectation fulfill हुए नहीं. Example, honesty in family relations. A person may struggle to be honest with a family member to avoid hurting their other emotions, other feelings. ना कहते कहते honesty को sacrifice करने पड़े family को बचाने पे. Ethical dilemma: should one tell a harsh truth or protect one person's emotions with a white lie? Getting or not? Dilemma private life रे केमिति आसे जदि person ଅନେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପସିବଲ୍ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକିନା ସେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଯଦି ସତ୍ୟ କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଟ୍ରୁଥ୍ କହୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଟ୍ରୁଥ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କାହାକୁ ନା ନାଇଁ ଟ୍ରୁଥ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କାହାକୁ ତ ଡିଲେମା କ'ଣ ତୁମେ ହାର୍ସ ଟ୍ରୁଥ୍ କହିବ ଆଉ ହାର୍ସ ଟ୍ରୁଥ୍ କହିକି କାହାକୁ ଇମୋସନ୍ସକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ଜଣଙ୍କର ପର୍ସନ୍କୁ ଇମୋସନ୍ସକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇ କହିକି ତାକୁ ହର୍ଟ କରିବ ତ ସେଇଟା ଡିଲେମା ତୁମ ଭିତରେ ଆସେ ସେଇଟା ଡିଲେମା ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସେ ନା ନାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଡିଲେମା ତୁମ ଆସେ ନା ନାଇଁ ତ ସେମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟୁ ଯେ ଦେଖିବା ଲୟାଲିଟି ଭର୍ସେସ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ a friend might discover that another friend is cheating in an exam or relationship dilemma କ'ଣ should they stay loyal to their friend or report to the wrongdoings ତୁମେ ଏଇଟା ଏଭରିଡେ ଲାଇଫ୍ର ଫେସ୍ କରିଥିବ कि एग्जाम रे जड़े चिटिंग करुच्ची बट तुम सी बहुत क्लोज फ्रेंड तुम्हें कौन चाहिए सी सांगटा को कहीदेव इनविजिलेटर पाखे सामने ना तुम्हें जेहेतु तुम सांग तुम्हें प्रति लयाल रही ये भी प्राइवेट लाइफ आउ एठी एथिकल डिलेमा आसुची तो यही समय जो चैलेंजेस आसे बैलेंसिंग द ऑनेस्टी विथ इमोशंस है प्राइवेट आ ये है एथिक्स मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज करवा देन डीलिंग विथ ट्रस्ट एंड बिट्रियल ये केसेस रे तुम्हें ये फेस करिवो जोंडा कि एथिकल चैलेंजेस इन प्राइवेट लाइफ ऑल ऑफ यू क्लियर और नॉट प्राइवेट लाइफ रे कौन कौन एथिकल चैलेंजेस रही पारिबे गेटिंग और नॉट बुझिपारा नहीं तो ऑनेस्टी दीज आर डिलेमा जोटा कि एक्सपेक्ट करो सिमिलर एथिकल चैलेंजेस इन पब्लिक रिलेशन व्हाट आर द चैलेंजेस इन पब्लिक रिलेशन कौन कौन चैलेंजेस आसी पारे पब्लिक रिलेशंस माने तुम्हें जो काम करुच वर्क प्लेस हो या गवर्नेंस हो या लीडरशिप हो इन्वॉल्व हायर एथिकल अकाउंटेबिलिटी So these relationships demand transparency, fairness, and responsibility, often affecting many people. Right? So good देखिवा workplace integrity. An employee discover that their manager is engaging in financial fraud. जने employee देखला कि तार manager ओके जने employee देखला तार जो manager सी चोरी करुची डकायती काम करुची राइट तो डिलेमा कौन तुम्हें ये रिपोर्ट ये इश्यू को रिपोर्ट करिवो ना नहीं बुझिपाला नहीं शुड दे रिपोर्ट द इश्यू और रिस्किंग देयर जॉब ऑब्वियसली तुम्हें वर्क प्लेस रे जदि तुम्हें मैनेजर तुम सीनियर एगेंस्ट किसी कहबो तुम्हें तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करिवो तो शुड दे रिपोर्ट द इश्यू और रिस्किंग देयर जॉब और स्टे साइलेंट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ ये जो डिलेमा आसी गला
ना नहीं। तो कथा है कौन जिते पब्लिक रिलेशन मु प्राइवेट रिलेशन कथा कहली एथिकल चैलेंजेस कौन या डिलेमा कौन एठी भी सेम जिनस कि एम्प्लॉई ये मैनेजर को देखिला ये चोरी चकाई करुच्ची तार जो लॉयर जो पीपल जोटे कि ये नॉर्मल एम्प्लॉई से इश्यू को तार जॉब को रिस्क करिकी से इश्यू को उठेबो ना नहीं व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस देन आउ गोटे इश्यू देखियो पॉलिटिकल एथिक्स ए पॉलिटिशियन रिसीव ब्राइब इन एक्सचेंज ऑफ फेवरेबल पॉलिसीज ओके जानिच धर बड़ बड़ इंडस्ट्री वाइल मो सपोर्ट गोटे माइनिंग पॉलिसी कर दियो तुमको मुझे 100 कोटी टका पकेट देवी करदेवी आ से पॉलिसी थ्रो सी जो माइनिंग वाला सी 1000 कोटी टका एक्सट्रा कमेब से 100 कोटी टका देकी 1000 माने आउ 900 कोटी टका एक्सट्रा कमेबा सी देला गेटिंग or not so politician bribe receive कला फेवरेबल पॉलिसी रिसीव कला should they accept the bribe for personal gain should ये जो पॉलिटिशियन ये पर्सनल गेन पूरा पॉलिसी को चेंज करवा और इम्पैक्ट कर पीपल जो रिसोर्सेस को जे जे पैसा जे दब तार काम है कौन सी तार 10 टाइम्स तार 100 टाइम्स से बेनिफिट अर्न कर ना सी कहीं पैसा दब तो शुड दे एक्सेप्ट द ब्राइब फॉर पर्सनल गेन और अपहोल्ड इंटीग्रिटी एंड सर्व द पब्लिक ऑनेस्टली गेटिंग नॉट तो यही कंडीशन रे ये पर्टिकुलर फेलो ए पर्टिकुलर पॉलिटिशियन हो या पर्टिकुलर चाहे तुम सिविल सर्वेंट हो से कौन डिसाइड कर डिलेमा भर रहा कि वन टाइम मत 100 कोटी टका मिल जाऊँगी 100 कोटी टका जीवन सारा किसी करा पड़ोनी है ना नहीं आउ 5टा इलेक्शन मुझे लड़ीदेवी 100 कोटी टकर आराम से आउ बर्तमान आउ गोटे डिलेमा कौन कौन मोर पर्सनल गेन या इंटीग्रिटी को मु बर्बाद करी या ऑनेस्टली मुझे पब्लिक को सर्व करी तो दिस डिलेमा इज जोटे कि तुमको चैलेंजेस आसे तो कौन ना कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल गेन एंड पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये की एथिकल चैलेंजेस ये पब्लिक रिलेशनशिप करप्शन एंड एब्यूज ऑफ द पावर and ensuring fairness and transparency these are the challenges ase jetebale public life रे या public relationship रे these are ethical challenges private relations रे these are ethical challenges so you can deal with it so while ethical challenges exist in both private and public life public relations require greater accountability due to their broader social impact है ना नहीं तुम्हें प्राइवेट रिलेशन रे जड़े दी जन लोक इम्पैक्ट हे फैमिली भितर ही इम्पैक्ट हे बट पब्लिक रिलेशंस रे लार्जर या ब्रॉडर पीपल इम्पैक्टेड एथिकल डिसीजन मेकिंग इन प्राइवेट लाइफ इज ऑफन गाइडेड बाय इमोशंस एंड पर्सनल वैल्यू while public relation demand fairness integrity legal compliances understanding these differences can help individuals navigate ethical dilemma effectively समस्ते क्लियर अच्छ समस्ते भल से बुझिल दिस वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस या रिलेटेड लिंक क्वेश्चंस भी बहुत सारा हो पारे ओके व्हाट आर द कंट्रास्ट द एथिकल चैलेंजेस फेस्ड इन द प्राइवेट रिलेशनशिप वर्सेस पब्लिक रिलेशन आमे किसी एग्जांपल देलु एवं सही एग्जांपल देगी से आर्गुमेंट को सपोर्ट करू क्लियर ओके नेक्स्ट देखिबा discuss the ethical dimension of environmental conservation the contemporary global context ethical dimension okay so environmental ethics कौन एटी environmental ethics ऊपर बेसिकली क्वेश्चन so environmental ethics is the discipline that studies the moral relationship value and moral status of human beings to
the environment and its non-human content and its non-human content. माने कौन moral relationship, values and moral status of human being to the environment. And non human content माने environment related जहाँ content जोंटा की जहाँ impact होचे non human. Rabindranath Tagore gave the definition on education which coincided with environmental ethics. The definition is given here under: the highest education is that which does not merely gives us information about, makes our life harmony with all. Okay, so the highest education कौन खाली आमको इनफॉरमेशन दियानी लाइफ विषय इन हार्मनी विथ ऑल एक्जिस्टेंस माने मतलब एनवायरमेंट भी आसीगला. सो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन is an ethical responsibility. It's an ethical responsibility that ensure the well-being of present and future generation. Very important. Ethical responsibility कौन पाई ना तुम्हारा present and future generation पाई तारा well-being पाई तुम्हें ensure करेगा. In the contemporary global context, ethical consideration in environmental conservation revolve around sustainability, justice, accountability. Okay, environmental conservation कहाँ under revolve करुची sustainability. This is very important. Sustainability तुमको put करिया पड़ी बैठी. Justice and accountability. These ethical dimension influence policies, corporate practices and individual behavior to protect the planet. Okay, एवं से जो एथिकल डायमेंशन ही तुमको इन्फ्लुएंस करिवा पॉलिसीज गवर्नमेंट रो पॉलिसी कॉर्पोरेट रो प्रैक्टिसेस या इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करिवो सेति पई एथिकल डायमेंशन इज वेरी मच नेसेसरी इन केस ऑफ एनवायरनमेंट. सो प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एथिक्स जो देखिवा हमें principle of sustainability. This is very important concept. And principle of non-maleficence and principle of justice, principle of precautionary substitutions, principle of community and principle of beneficence. Maleficence and beneficence. Beneficence में benefit दबा benefit for environmental conservation. Maleficence में non mal basically जोटा की affect करुथुवा ता against रो non maleficent. Okay, so these are basically principle of environmental health ethics. So intergenerational responsibility. Ethically, humanity has a duty to preserve natural resources. Ethically, humanity रो काम कौन तार ड्यूटी है to preserve the natural resources for future generation. Unsustainable practices such as deforestation and excessive carbon emissions threaten biodiversity and climate stability. So कौन एटा ला humanity रो duty, ethically the duty of the humanity to preserve the natural resources. So लेखिन note करनियो for future generation. Unsustainable practice such as deforestation, excessive carbon emission threaten biodiversity and climate stability. Basically this is environment and ethical dimension ठीक mix कर दो. For example, the Paris Climate Agreement 2015 binds country to limit global warming
and ensuring sustainable planet for future generation. Paris climate agreement ସବୁଠୁ important. The ethical impact କ'ଣ ନା encourages nations to adopt long term climate policy. Climate policy ଟା long term policy କୁ short term ନୁହଁ. And promoting renewable energy ଯେମିତି ଆମର ଦେଖୁଛ target ରଖା ହେଇଛି 170 gigabyte gigabyte बोलो क्या तो what reducing carbon footprints, renewable energy and reducing carbon footprint. Then environmental justice, ethical governance demand fairness in addressing environmental issues. So ensuring that marginalized community do not suffer disproportionately. Poor and developing nation often bear the worst consequences of environmental degradation caused by the industrialized nation. Ethical impact on the highlights the need for equitable policy that protect vulnerable populations from environmental harms. तो या उपरे हाइलाइट सो एगुटे एथिकल इम्पैक्ट कौन आमर डेवलपिंग कंट्री पुअर कंट्री मोस्टली बेसी हार्म होती ना नहीं कहीं ना पाखरे बेसिकली इंडस्ट्रीज न थाए बट इंडस्ट्री जो स्टार्ट हुए से बेसी इम्पैक्ट करती एमती पॉलिसी आने दरकार से vulnerable पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करिया दरकार. देन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR. CSR जोटा कि हैव एथिकल ड्यूटी जड़ी कॉर्पोरेशन हैज एथिकल ड्यूटी टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल हार्म कहीं तांको रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना दे आर द इंडस्ट्रियलिस्ट दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ एनवायरमेंटल हार्म. So their duty is to minimize the environmental harm and adopt sustainable practices. Business that prioritize profit over the environmental contribute pollution, deforestation and climate change. जे प्रॉफिट को ध्यान देगी एनवायरमेंटल एनवायरमेंट को ध्यान दिए एनवायरमेंट एनवायरमेंट को छाड़ी प्रॉफिट को बेसी ध्यान दियंती से माने बेसिकली पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करती डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज. एग्जांपल टेस्ला पुश फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट्स क्लीन एनर्जी and reduces carbon emission, setting an ethical model for the industries. Similarly, ethical impact encourages company to adopt green technology and responsible resources management. Then similarly, biodiversity and animal rights. Ethical conservation extend to protecting ecosystem and preventing the extinction of species due to human activity like deforestation, poaching and species and poaching and pollution. Second, ethical conservation extend to protecting ecosystem and preventing the extinction of the species. So ये केमिति हेउची ना ह्यूमन एक्टिविटी पाई एक्सटेंशन केमिति हे जाउची ना डिफॉरेस्टेशन जुगु पोचिंग जुगु किंबा पोल्यूशन जुगु. तो आमर एथिकल कंजर्वेशन एठी ये हवा दरकार. सिमिलरली जार एग्जांपल देखियो द बैन ऑन आइवरी ट्रेड इन वेरियस कंट्री हैज हेल्प टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड एलिफेंट फ्रॉम इलीगल हंटिंग. Similarly, ethical impact कौन ना promotes laws and global cooperation to prevent species extinction and habitat destruction. यार ethical impact इटा. And accountability and global cooperation. Environmental conservation require international collaboration. As pollution and climate change impact all nations. ये nation इटी impact करेनी. All nation को impact करे. Government, corporations and individuals must be held accountable for the sustainable practices. Example, the United Nations Sustainable Development Goal emphasizes global effort for tackling environmental issues through collective action. तुम्हें सब एरिया को टच करीगल सब एरिया को टच करीगल चाहे अकाउंटेबिलिटी हो ग्लोबल कोऑपरेशन हो चाहे बायोडाइवर्सिटी एनिमल राइट्स हो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो इंटरजेनरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो या एनवायरमेंटल जस्टिस हो ये सब में देख ले. Case study of environmental ethics. The Bhopal gas disaster. देखिबा poor safety standard and negligence at the chemical plant caused a gas leak that killed thousands in Bhopal, India. Illustrated need for ethical practices and accountability in hazardous operations, especially in developing countries.
So deforestation of Amazon, forest clearing for logging, mining, and ranching accelerate loss of biodiversity and harm indigenous tribes. Government must balance economic interest, protecting vital ecosystem and rights. Global cooperation या उपरे refer थाए. Okay. These are basically या ऊपर एक case study देखी परिवो. So ethical environment conservation is very important. ये questions बहुत सब वर्ष आसिबार chances थाए. Crucial in ensuring sustainability, justice and accountability. Sustainability, justice and accountability. By adopting responsible policy, businesses, individual actions, society can protect the environment while ensuring economic. The global commitment to conservation is not just a policy requirement, but a moral obligation to future generations and all living. Clear? These are basically for environment justice, sorry, environment conservation अनुसार ये तुम्हारा ethical dimension. Then examine the philosophy upre. Examine the ethical philosophy. Examine the ethical philosophy of Dr. B.R. Ambedkar and its significance in the modern Indian governance. It is also very important one. Philosophical ये भी पढ़े. भारत रत्न Dr. भीमराव आंबेडकर. Life should be great rather than long. ये सब कोर्स गुड़ा सब लेखिकी रख. कोर्स गुड़ा काम रे आसीबो. एग्जाम रे कोर्स गुड़ा दबो जरूरी. Similarly, I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity. Dr. B.R. Ambedkar. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Ambedkar's philosophy was deeply rooted in the principle of social justice, equality, and human rights. Social justice, equality, and human rights. Uh, he was a vocal advocate for rights of the oppressed and marginalized sections of Indian society, including Dalit, formerly known as untouchables, women, and religious minorities. କାହିଁକିନା ସେ ସେଇ ଇଏରୁ ଆସିଥିଲେ. Ethical philosophy of Dr. Justice and Equality. Justice and Equality. Dr. B.R. Ambedkar emphasized social, economic, and political justice, the foundation of ethical society. He opposed caste-based discrimination. He opposed caste-based discrimination and fought for equal rights for all citizens. Fought for equal rights of all citizens, particularly Dalit and marginalized community. नहीं जानी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता ता उपरे लड़ी थे. तो जस्टिस कौ प्रकार चाहूले सी सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस द फाउंडेशन ऑफ द एथिकल सोसाइटी. He opposed caste based discrimination and fought for equal rights for all citizens, particularly Dalit and marginal community. His advocacy for affirmative action, that is reservation policy, was based on the ethical principle of corrective justice and giving disadvantaged group equal opportunity. कॉलेज डिसएडवांटेज अच्छी से करेक्टिव जस्टिस कह जाए ता थ्रो रे तांकर डिसएडवांटेज पोजीशन थिले तांको ओके. तो हिज एडवोकेसी जो कि फॉर एफर्मेटिव एक्शन माने तार सॉल्यूशन कोन ना रिजर्वेशन पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ करेक्टिव जस्टिस. वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ा सब मको एई एंगल ले लेखिया को पड़िबो एग्जाम रे नुहे
बी आर आंबेडकर माने बी आर आंबेडकर जहाँ जहाँ करते सब लिखिदी पड़े आसो हिस्ट्री भाया से भाया मार्क मिलबनी ओके देन लिबर्टी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी he believed that true democracy is not just political but also social and economic. Believe that true democracy is not just political but also social and economic. Ethical decision making should uphold individual freedom. Ethical decision making should uphold individual freedom, allowing people to think, speak, and act without fear. तो डेमोक्रेसी से खाली कौन था कि खाली सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी ethical decision making should uphold the individual freedom and allowing people to think speak and act without fear and favor, right? Liberty, so in governance this translates into protection of fundamental rights, ensuring that every citizen is treated with individual dignity, fundamental rights. Liberty जोंटा कि individual freedom, freedom of thinking, freedom of speak and act without. Then constitutional morality, sir गोटे देखिलु justice and equality देखिलु तांकर ethical idea, ethical philosophy. Then ताकर देखिलु कौन liberty and individual dignity. Then constitutional morality. Ambedkar introduced the concept of constitutional morality, meaning that government and citizens should adhere to the spirit of constitutional morality or constitutionalism. Is the government and the citizens should adhere, should respect, should follow the principle of follow the spirit of the principle of constitution, not just its legal framework. कौन ओके कन्स्टिट्यूशन तो आमको दंड दौनी ताले छाड़ कन्स्टिट्यूशन आमको दंड दौची फंडामेंटल राइट ग्यारंटीड अच्छी ताले छाड़ से फॉलो करवा आउ जो प्रिंसिपल डीपीएससी वगैरह ताको फॉलो करिबानी आमर कन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करवा कन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो करवा दिस प्रमोट रूल ऑफ लॉ, accountability, transparency, and respect for institution governance. Accountability, transparency, respect the institution in governance. Ethical governance, as per his vision, requires leaders to rise above personal biases and uphold justice. The ethical governance, as per his vision, requires leader to rise above the personal biases and uphold justice. Then fraternity and social harmony. He believed that fraternity, that is brotherhood, is essential for national unity. The ethical governance should promote inclusivity, communal harmony, and respect for diverse culture. Inclusivity, communal harmony, and respect for diverse culture. So principle on secularism, policies on secularism, minority rights, and social integration reflects his ethical vision. ये जो सेक्युलरिज्म उपरे तांकर प्रिंसिपल हला माइनॉरिटी राइट्स उपरे सोशल इंटीग्रेशन उपरे सेथु रिफ्लेक्ट करे हिज एथिकल विजन. तो फ्रैटर्निटी एंड सोशल हार्मोनी जोंटा कि फ्रैटर्निटी कथा कहलु नेशनल यूनिटी पई एसेंशियल एवं हार्मोनी बेसिकली इंक्लूसिविटी प्रमोट करे कम्युनल हार्मोनी एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्स कल्चर and like secularism also minority rights and social integration also reflects his social harmony. Significance of modern Indian governance देखिबा सेटा फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही तांकर एथिकल ये आसला सोशल जस्टिस पॉलिसी होला सेक्युलर इनक्लूसिव गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी रे मध्य ये फिक्स करि परिबो. कंक्लूजन देखिबा डॉक्टर बी आर अंबेडकर्स ethical philosophy continues to shape India's governance and ensuring justice, fairness and inclusion. सब मन रखियो किसी वर्ड गुडा को एथिक्स रे खास करके देखिक रखि से गुडा को यूज करबो एग्जाम रे. His vision promotes progressive democracy where every citizen has dignity and equal rights.
In modern times, leaders and policymakers can uphold values by strengthening social justice, constitutional morality, and rational governance. And rational governance. Then देखिबा family is the first school of values. Family is the first school of values. Critically analyze the role of family in shaping the ethical framework of individual. Okay, ethical framework of an individual. Family is the first school of values, means that the primary place where persons learn important life values like honesty, respect, kindness, and responsibility within their family, as it is the first environment where they are exposed to. Family रे ही ସେମାନେ expose हुଅନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା. So family is the foundation of ethical development, early moral education. From childhood, individuals learn difference between right and wrong through parental guidance. है ना नहीं? पेरेंट मानकर गाइडेंस नहीं एटा करना नहीं एटा कर एटा भल नुह एटा खराब ये सबरू शिख concept like honesty, kindness, respect, responsibility are often instilled at home before formal education. तुम जानिथिबो honesty कोउटा तुम जानिथिबो चोर किए जानिथिबो डकायत किए जानिथिबो दया काहा करिया कथा रेस्पेक्ट काहा करिया कथा मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन पुअर रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन झीर रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ये सब पिला गुड़ा सब शिखिक आसता देन बेसिकली अर्ली moral education थाए फैमिली rule modeling and behavioral imitation. Children learn ethical behavior by observing their parents and elders. है ना सेम को रोल मॉडल भाभी दिए. If parents exhibit integrity, compassion, and fairness, children are likely to internalize these values. Most of the cases रे कहबे सर सेमती एग्जांपल अछि सर मु देबी कहबे सर सेमती एग्जांपल अछि फैमिली एमिति अछंती जे माने बैड बिहेव करंती. ओके एमिति फैमिली अछंती सर से माने माने बापा माँ बहुत भल पुओ एमती बिछुआती एमती भी फैमिली अच्छी सर बापा माँ बिछुआती पुओ बहुत भल एमती एक्सेप्शन इज देयर बट एक्सेप्शन को लेकिन आम ये करें. So good, if parents exhibit integrity, compassion, and fairness, children are likely to internalize these values. However, if they witness dishonesty, discrimination, or unethical practices, they may normalize such behavior. Unethical practices, they may normalize such behavior. And emotional and social development. Emotional and social development. The family teaches empathy, patience, and cooperation, which are essential for ethical decision making. Getting or not? So आम देखिले गोटे है फैमिली एज ए रोल मॉडल दैट इज मोरल एजुकेशन रे प्रथम फैमिली अर्ली मोरल एजुकेशन देन रोल मॉडलिंग एंड बिहेवियरल इमिटेशन ये हुए देखी जाओ. Then emotional and social development in family teaches empathy, patience, and cooperation, which are essential for ethical decision making. Healthy family relationship foster respect for others' opinion, conflict resolution, and emotional intelligence. So healthy family relationship पिला जन्म होला बेले ये बहुत जरूरी तार ओपिनियन केमती हबो कॉन्फ्लिक्ट को केमती रिजोल्यूशन करिवो किंबा इमोशनल इंटेलिजेंस. देन चैलेंजेस एंड लिमिटेशन ऑफ फैमिली इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. लिमिटेशन कौन फैमिली इन्फ्लुएंस तो हेगला तापर सोसाइटी को आसला. While family is crucial, school, peer groups, media,
एंड सोसाइटी ऑल्सो सेव द इंडिविजुअल एथिक्स ये घर बाहर स्कूल को गला मीडिया देखला न्यूज चैनल देखला फिर को तार सांग साथी एंड सोसाइटी समटाइम्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस चैलेंजेस और कॉन्ट्राडिक्ट द फैमिली वैल्यू देख न तुम ए मित्र ये भी आसुव आम घर कौन कहते घर कौन कहना पिला टी बड़ हो बाहर कर यार घर तो आम एमती कहते तुम घर एमती ता घर एमती है ये ताले सब बेकार कथा तो कॉन्ट्राडिक्ट द फैमिली वैल्यूज रिक्वायरिंग इंडिविजुअल टू मेक इंडिपेंडेंट मोरल चॉइसेस यही कंडीशन रे इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट मोरल चॉइसेस दरकार ना सी कन्फ्यूज हम ना सी डिसाइड करें जब डिसाइड कर कौन डिसाइड कर समय डिसाइड कर देन वेरिएबिलिटी इन एथिकल स्टैंडर्ड not all families provide positive moral foundation not all families provide a positive moral foundation if a family practice gender bias achi caste discrimination achi unethical means of personal gains achi these value may be passed down such cases individual must critically evaluate and unlearn harmful beliefs सेमती मानि नि मु पिला जन्म होती पिला घरे मुझे देखिली कास्ट सिस्टम अच्छी घरे मुझे देखिली अनटचेबिलिटी अच्छी घरे मुझे देखिली जेंडर बायस अच्छी बट मु क्रिटिकली जो थिंकिंग कली कहीं ये कौन व्हाई कौन पर छुईदे कौन हो बुझिपाल नहीं ये डिपेंड करे पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल मस्ट क्रिटिकली इवालुएट एंड अनलर्न हार्मफुल बिलीफ्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस सिमिलरली चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर with nuclear family single parent household and digital distraction direct family influence has evolved with nuclear family single parent household and digital distraction direct family influence has evolved modern challenges like work life balance social media exposure and declining joint family system impact the value transmission आगु जो वैल्यूटा ट्रांसमिशन होता इवल्व होता वैल्यू सेटा धीरे धीरे कमिला कहीं सी घरे रोनी सी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस हो मोबाइल 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 चल so balancing family influence with personal ethics an individual grow they develop critical thinking and ability to question inherited values है ना नहीं वे जहाँ वैल्यू नहीं कि आसो से तुम्हें तुम भर क्रिटिकल थिंकिंग आसे कि कौन पाई है कहीं एक्सपोजर टू एजुकेशन कौन पाई एमती हुए ना सी एजुकेशन पाइला डाइवर्स कल्चर में मिसिला एथिकल डिलेमा ता भितर आसिला एलाउ कला पीपुल टू रिफाइन देयर मोरल कंपास ethical decision making should be based on universal human values rather than blind adherence to the family tradition this is very important rather than blindly family tradition को फॉलो भाई आमर फैमिली तो यह कहती या हुए आम से करूँ तुम्हें डिसीजन मेकिंग के कौन ठीक हम जोटा कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू तुम्हें जदि भावुच कि तुम फैमिली रे जो कल्चर अच्छी यूनिवर्सली से अच्छी यूनिवर्सली से ट्रेडिशन अच्छी देन यू कैन गो फॉर इट ओके तो जदि कंक्लूजन देखा फैमिली व्हाइल फैमिली सर्व्स एज ए फर्स्ट स्कूल ऑफ वैल्यू इज नॉट द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एथिक्स a combination of education personal experience societal norms rational thought ultimately shapes the one's ethical framework the key lies in the embracing the positive value imparted by family while questioning and refining the beliefs through personal growth and awareness what do you understand by emotional intelligence ये questions भी आसे this is also very important one but last one this one what do you understand by emotional intelligence discuss its key component and relevance in governance या भी तुम गोटे क्वेश्चंस पाई एग्जाम रे एथिक्स रो पाखापाखि 20-25टा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस सब एरिया को टच करके मु करेबी तुमको आगे ये इमोशनल इंटेलिजेंस कौन इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर टू द एबिलिटी टू recognize understand manage and influence one's own emotion and those of others very important এটা
इमोशनल इंटेलिजेंस ना तुम्हें सोसाइटी रे जे जोटा कि एडमिनिस्ट्रेशन काम करिया डिफिकल्ट ग्रुप रे काम करिया डिफिकल्ट इट प्लेज ए क्रुशियल रोल इन डिसीजन मेकिंग लीडरशिप and interpersonal relationship. It plays a crucial role in decision making, leadership, and interpersonal relationship, making it particularly important for effective governance. Making it particularly important for effective governance. Key component of emotional intelligence. Key component of emotional intelligence. प्रथम है self awareness. Self awareness. The ability to recognize and understand one's emotions and their impact on thoughts and actions. Example, the civil servant acknowledging stress and managing it to avoid biased decision making. है ना जिते तुम्हें ऑलरेडी सर्विस रे अच्छ तुम भितर जदि बायस बेसिकली स्ट्रेस थी एवं सेटा को मैनेज करिकी ताकू बायस को एवॉइड करवा सेटा तुम चैलेंजिंग स्टाइल देन सेल्फ रेगुलेशन द कैपेसिटी टू कंट्रोल इंपल्सिव रिएक्शन एंड अडॉप्ट टू चेंजिंग सिचुएशंस सेल्फ रेगुलेशन कैपेसिटी टू कंट्रोल इंपल्सिव रिएक्शन ना तुरंत गरम हो है ना नहीं and adapt her to changing situation. Example, a police officer maintaining composure during a violent protest rather than reacting aggressively. ताकू खराब भाषा कहते खराब कथा कहते सी शोधिदेव ना then motivations the ability to remain committed to goal ability to remain committed to goal despite challenges driven by internal values rather than external rewards से भाया स्ट्रंग मोटिवेशन थी दरकार चैलेंजेस आसो आई हैव टू कंप्लीट क्राइम विल टफ येस आई हैव टू डू इट so driven by internal values so the bureaucrats continuing welfare reform the bureaucrat continuing welfare reform despite political opposition तुम काम कर चल वेलफेयर काम कर पॉलिटिकल ऑपोजिशन आसीबो देन एम्पैथी तो कौन कौन एलिमेंट देखिले सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ रेगुलेशन मोटिवेशन एम्पैथी the ability to understand and share feeling of others essential for fair and just decision making तुम्हें जदि आउ कहार फीलिंग्स को बुझी न पारिबो जी पर्टिकुलर फील्ड रे अच्छी लोक कहीं यू आर ए पब्लिक सर्वेंट तुम जदि न बुझी पारिबो ताहले तुम्हें डिसीजन मेकिंग नहीं पारिबो ठीक से ए जज कंसीडरिंग द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ एन एक्यूज्ड while delivering verdict जजेस माने तार कंडीशन देखिकी verdict करो कि कार सेमती एलिमनी बर्तमान जमाना चलती एलिमनी तुम 10 करोड़ 10 करोड़ ये जो एलिमनी सी बेचारा दे पारिबनी तो जजेस देखियो भाई ये केते कोन दे पारिबो से अनुसार verdict दबो देन सोशल स्किल the ability to build relationship manage conflict and inspire others for example a public administrator engaging with diverse stakeholders to implement a new policy effectively okay ताने कौन सोशल स्किल माने एबिलिटी टू बिल्ड ए रिलेशनशिप मैनेज कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्पायर अदर्स कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन रे को केमती मैनेज करी देन रेलेवेंस ऑफ दीज आर कौन ना एलिमेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस तेला कौन do what you understand by emotional intelligence discuss the key component and relevance on na effective leadership EI emotional intelligence helps leaders to remain calm under pressure and make rational decisions and inspire the subordinates. Prime Minister or Chief Minister are using EI to navigate
crisis like pandemic, crisis like habo, crisis like pandemics and economic downturns ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ inspire କରନ୍ତି pressure को handle କରନ୍ତି then conflict resolution empathy and social skill aid in mediating dispute ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ dispute whether between community or a bureaucratic data departments district magistrate using dialogue to resolve the communal tension ये गोटे emotional intelligence relevance then improved decision making self awareness and regulation prevent impulsive decision improve decision making self awareness and regulation prevent impulsive decisions and enable rational policy formulation policy maker considering both economic growth and environmental sustainability दीटा याक देखिए मेकिंग इंप्रूव हो केमती सेल्फ अवेयरनेस एंड रेगुलेशन दीटा कर कंसीडर करिया देन पब्लिक सर्विस डिलीवरी empathy enables administrator to understand citizens grievances and respond effectively a government officer ensuring hassle free access to welfare scheme for underprivileged then finally देखिए corruption prevention high EI foster integrity and ethical decision high emotional intelligence foster कौन करे in integrity and ethical decision reducing chances of abuse of power for example देखिए the bureaucrats refusing bribes despite external pressure due to strong self regulation and ethical motive due to strong self regulation and ethical motivation these are some of the tomorrow relevance so effective leadership जोटा कि एग्जांपल दे देव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कथा दे इंप्रूव डिसीजन मेकिंग जो पॉलिसी मेकर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी को देखिए देन पब्लिक सर्विस डिलीवरी जोटा कि गवर्नमेंट ऑफिसर जोटा कि हेसल फ्री एक्सेस टू वेलफेयर स्कीम एंड करप्शन प्रिवेंशन दीज आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट रेलिवेंस एंड की कंपोनेंट कौन ना सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ रेगुलेशन मोटिवेशन एम्पैथी एंड सोशल स्किल दीज आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर questions so देखिए finally so emotional intelligence is a vital skill for governance enabling public servant to make ethical empathetic and effective decisions in an era of increasing complexity of in administration integrating AI into policy making and governance will enhance public trust efficiency क्लियर तो ये तुम्हें क्वेश्चन जवाब दब आई होप बहुत सारा एरिया रो जो एथिक्स रो पार्ट चाहे फिलोसफिकल पार्ट हो इमोशनल इंटेलिजेंस हो एनवायरमेंटल एथिक्स हो ये सब आम देखिले पब्लिक एथिक्स इन पब्लिक लाइफ प्राइवेट लाइफ सब आम पार्ट देखिले आज तो आई होप तुम्हें समस्ते बेनिफिट पाइब ये ताको यूटिलाइज कर एग्जाम रे so thank you guys so make notes out of it I will public in जो चैनल ओएस सब देखीदेव बाकी तुम्हें अलग आप तो रही so thank you guys that's it for today guys and next classes tomorrow आमे देखिबा first paper 1 रो आउ किछि issues thank you till then thank you bye bye take care